Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we will start with our geography lesson number 8, that is Introduction to Economics. So, we will start with the basic definition of economics. Now, what is economics? Economics क्या होता है, उससे related what are the aspects, क्यों बना वो. Management of individual or family finances is mainly related to income and expenditure, that is economic factors. Now these lines means economic factors. So these things which are related, management of individual, if we are managing our house, the household incomes like daily food, what all amount we spent in a month, and what is our salary, according to that we will manage all the things. So all these things means economics. It is a geographical term. Okay, now economics, this word in Greek, this word means oikonomia, and we have derived this word from Greek. Okay, Greek culture se we have derived it, which means family management. Oikonomia basically means the management of family management. We even understand that how should we use our money, labor, time and land effectively, and how should we satisfy the needs of the people with having various resources, and this is the study matter of economics. Okay, now according to Lionel Robbins, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Here with नहीं यहाँ पर actually it is which. ओके, विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है कि वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन एंड्स, टू एंड्स के बीच का वो एक रिलेशनशिप है जिसमें वेर यू हैव मिनिमम थिंग्स बट यू हैव टू मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. इन मिनिमम things you have to make all your uses, all your needs to be satisfied. That is economics according to Lionel Robbins. Okay, as we manage the finances of our family, similarly villages or cities, states, countries and world also need to have economic management. We have our family in it who manages everything. Finance सब कौन manage करता है? Mother, our father, the head of the family basically. In the same way villages, cities, states, countries और world, इसको भी manage करने के लिए we need someone. उसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उसमें कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, टूरिज्म पर कितने स्पेंड हुए, हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ऑल दोज थिंग्स. तो वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो किसके हाथ में, डेट इज़ अंडर गवर्नमेंट, डेट इज़ अंडर कंट्रोल, डेट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. Okay, so this much is okay. Now according on a global level there are three types of economics in which we can classify economy. Okay, now what are those three types? वो three types क्या है? Those are very important. Okay, capitalism, socialism and mixed economy. Capitalist, in your textbook it is capitalistic economy, socialistic economy and mixed economy, which is all equal. These three types of economies are there and we will study some of its examples also. So capitalist economy, the entire economy is controlled by private individuals and their main motive is profit and government interference is very less. Capitalist economy means the whole world's economy is controlled by private individuals. Those who are very rich in a country, they are controlling it. Ownership and management of means of production is basically in the hand of private individuals. Government is not included, government नहीं होती है उसमें. एंड व्हाट इज़ देयर मेन एम, उनका मेन एम होता है दैट दे कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है और गवर्नमेंट होती ही नहीं है. रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड, जो भी चीज़ है वट एवर इज एस्टैब्लिश देयर इट इज़ ओन्ड प्राइवेटली, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड. प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव. प्राइजेज आर डिसाइडेड बाई डिमांड एंड सप्लाई, क्या डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से दे आर डिसाइडिंग द प्राइस. एंड द यर कॉम्पिटिशन प्लेज अ मेजर रोल. So this word competition plays a major role over here. Government interference is minimum. Now some of its examples are USA, Germany, Japan and UK. These are examples which you have to memorize. Basically you should know the 5 characteristics of capitalist economy. Resources are privately owned, profit is their main motive, prices are decided by demand and supply, competition here plays a major role and government interference is minimum, with 2 examples, that is USA and UK.
Now move on to socialist economy. Socialist economy is the second economy. Now here socialist economy, it means it is controlled by the government. In a socialist economy, the entire economy is controlled by government, and there is no private ownership of resources, and their main aim is the welfare of society, not profit. If it is owned by private industrialists or private individuals, they will always look for their profit. Whereas अगर वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या होगा, वो लोगों के बारे में सोचेंगे. इट विल लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बिकॉज इट इज़ इन द गवर्नमेंट्स हैंड. देयर मेन एम विल बी टू अचीव द सोशल वेलफेयर. चाइना एंड एशिया हैव अडॉप्टेड सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, चाइना, एशिया, क्यूबा, these are socialist type of economy, those who have adopted it. Now some of its characteristics or resources are owned by the government. Same उसका opposite, वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ द मेन गोल. नो प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव, नो प्रॉफिट मोटिव, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है. सेंट्रल प्लानिंग, एवरीथिंग इज़ बाय द गवर्नमेंट, नथिंग. अब इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स इंडिविजुअल्स है ही नहीं, समझो. और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसा नहीं किसको ज़्यादा किसको कम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ये कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज इन मिनिमम. कॉम्पिटिशन प्लेज अ मेजर रोल. ठीक है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन वाला. ओके, ये पूरा हो गया सोशलिस्ट का. यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द इकोनॉमी विथ 2 एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी, ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम. को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स इज नोन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इसमें दोनों रहेंगे, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, और ये दोनों एक मेजर रोल प्ले करते हैं. एंड इट कंबाइंस. तो ये जब कंबाइन होगा तो इसमें एडवांटेजेस भी, इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के भी एडवांटेज और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के भी एडवांटेजेस. बेसिकली इट इज़ वेरी एडवांटेजियस. रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स. प्रॉफिट एंड वेलफेयर बोथ आर देयर गोल्स, क्योंकि उसमें प्राइवेट भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गया. तो प्रॉफिट वेलफेयर दोनों उनके गोल्स है. गवर्नमेंट कंट्रोल्स की इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है, की इंडस्ट्रीज इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे. ठीक है. बैलेंस बिटवीन सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स बेसिकली नो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज सुपेरियर, एवरी वन इज़ इक्वल. बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. और इसके 2 एग्जाम्पल्स, इंडिया एंड फ्रांस. आर इंडिया हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ सिस्टम बिकॉज इट इज़ वेरी beneficial and advantageous, because it is profit, it looks for both aspects, profit and social welfare. India, Sweden, UK, they all have adopted. Now there are some factors which affect an economy. Geographical area and natural resources. वहाँ पर कि वो उस जगह की क्या एरिया है, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, पॉपुलेशन, इज़ इट मोर, इज़ इट लेस, कितने लिटरेट्स है, कितने इलिटरेट्स है, ये सब इट इज़ वेरी नेसेसरी. ये पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, सत्यमेव जयते, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 5 है, ये 5 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. यू नीड ऑक्यूपेशंस, यू नीड literacy population, you need population, you need geographical area and natural resources, political sovereignty, you need all these things together. Now what is economy? Basically economic is an important social subject and we use it on a large scale for agriculture, trade, finance, administration, law, and it is something which we use in our daily life. Economics holds a paramount importance in the social development of humans. It has a very huge thing in the development of humans, very huge participation. It holds a paramount importance in the development, in the social development of humans. It has a very huge importance or a paramount importance. Now the very important topic which you will study in political science also, in history also, that is globalization. In general, globalization means you are aligning the world's economy, you are aligning the country's economy with the world's economy. जो country की economy है, you are basically aligning, you are basically connecting them. That is aligning, that is globalization. You will get more when I will read this paragraph about globalization. Globalization of the economy. The recent economy's policies are taking the economy towards globalization. Globalization means building a world economy. पूरे world की वो लोग एक economy बना रहे, right? Building a world economy. World economy is a borderless economy in which natural resources, profit, services, capital, labor and technology flow freely across borders of countries. ये सारी चीज़ें, which things, natural resources, profit, services, capital, labor and technology flow freely.
फ्रीली फ्लो करते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज़ के बॉर्डर्स में वो लोग फ्रीली फ्लो करते हैं विदाउट एनी restrictions. And this paragraph is all about definition. It means aligning the country's economy with the world economy. There is free trade and all restrictions. There is free trade and all restrictions on investments are set aside. वो बाजू में रख दिए जाते हैं because globalization means world की economy आपने connect कर ली है. Now, globalization was a very small topic. The next topic is the functions of an economy. Economy क्यों लगता है? What are the functions? हर कंट्री का अलग ही इकॉनमी रहता है. ऐसा तो नहीं ना ये सब कंट्री का सेम इकॉनमी रहेगा. नो, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डिफरेंट इकॉनमी. नेवरदलेस द मेन फंक्शंस ऑफ इकॉनमी आर सिमिलर. उनके फंक्शन सेम हो सकते हैं और मेन फंक्शंस के डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट, जितना हो सके उतना कम करना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस. नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम जस्ट वे में करना. मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर की इकोनॉमिक नीड्स के लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजंस मीन्स प्रॉपर, जो आगे भी काम आएंगे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. एंड देन डिसाइडिंग फॉर whom the goods will be produced. ये डिसाइड करना किसको देने चाहिए, फॉर whom it can be produced. So the 5 are deciding the product and quantity, minimizing the production cost and distribution of national income, making appropriate provisions, and deciding for whom the goods will be produced. So if we will do all these things, an economy strives to create a balance between limited sources and unlimited needs, because of course we are humans, so we have limited sources, limited resources, but our needs हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कम में भी बहुत. We have unlimited needs. Now it is a short introduction about a book named The Wealth of Nations. Adam Smith is known as the father of economics, and in his book Wealth of Nations, which was published in 1776, he has defined economics as the science of wealth. उसने economics को कैसा वो क्या define? The science of wealth, the wealth of nations, ये सब अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, द वेल्थ ऑफ नेशंस. उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है इकोनॉमिक्स को. The last concluding part is very important, which is everything included. Economy means a management of individual or family finances related to expenditure. Later, this economic activities of people together give birth to the study of economics. 3 types of economy: capitalistic, socialist, and mixed economy. Controlled by private individuals, profit is the main motive. Government interference is very less. Examples are US and UK. Then socialist economy, controlled by the government, no private ownership of resources, main aim is the welfare of society. Example is Cuba and China. Then mixed economy, both government and private sectors play, दोनों combined रहते, government भी private भी, both are combined. Advantage of capitalistic and socialist economy दोनों मिलते हैं. Then type of economy, then this table you can see all by your own. Type of economy, who controls, and some of the examples. Okay, now this was the end of our lesson. So thank you for listening so attentively.